हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का एसएसटी चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन रिसोर्सेज के सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द गंगा वैली। नंबर 2, बेस्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंटिनेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 10% पीपल लिव इन यूरोप। नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत होगा। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार होगा। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 to 59 ईयर्स। अब नेक्स्ट हमारा है बी फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इंडिया रैंक्स सेकंड इन पॉपुलेशन नेक्स्ट टू चाइना इन द वर्ल्ड। नंबर 2, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंड एडल्ट्स अबव 59 ईयर्स इज डिफाइंड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। Number 3, the growth of population is affected by its death rate, birth rate and migration. Number 4, the important attributes of population composition are sex ratio, age structure and literacy rate. Number 5, in India, almost half of the population resides in 5 states of India, that is Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh. Next, see true and false. Number 1, the total population of the world has crossed 10 billion mark in the year 2011. तो इसका होगा हमारा false. Number 2, the sex ratio of India in 2011 was 943. ये true होगा, ये आपके बुक में चार्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. Number 3, the density of population is the number of person per square kilometer of an area. ये भी true होगा. The natural growth rate of population is the difference between the birth rate and the death rate. तो ये भी true होगा आपका. Population becomes human capital when there is investment made in industries, agriculture and means of transport. तो ये हमारा false होगा, क्योंकि population कोई human capital तब बनता है जब उसमें हम education देते हैं, उसको skill देते हैं तब. नेक्स्ट हमारा डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ है. व्हाट इज मीन्ट बाय द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. इसका आंसर होगा, द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. Number 2, what are the 3 important attributes of population composition? Answer, the 3 important attributes of population composition are age structure, sex ratio, literacy rate. Number 3, what makes the human beings the most valuable resource? The human beings are considered as the most valuable resource due to their creative skills, intelligence and thinking. Question number 4, which regions of the world have high concentration of population and why? इसका आंसर होगा, फर्टाइल लो लैंड ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया, हुआंगहो इन चाइना, नील इन इजिप्ट, मिसिसिपी इन यूएसए एंड टिग्रिस इन इराक हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन because of favorable climate condition, high level of industrialization, well developed agriculture, good means of land and water transportation. Next, question number 5, highlight the characteristic of the sparsely population region of the world. तो इसका आंसर होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर, दे डू नॉट हैव फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, दे आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. नाउ नेक्स्ट, ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन रिलीफ एंड क्लाइमेट एज फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें देखिए रिलीफ के बारे में पहले हम लिखेंगे, हाई माउंटेन्स, रग टेरियन एंड रॉकी प्लेट्यू, रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन सेटलमेंट्स, where plain areas of the world are most favorable places for human habitation, where transportation facility are good and rivers are navigable. Next, climate के बारे में, climate is one of the most important factors affecting the distribution of population. People prefer to live in regions where temperature and rainfall are moderate. Excessive heat, cold, dryness or wetness cause discomfort. Question number 2, how do minerals and industries affect the distribution of population? Explain. Answer, minerals deposits play a dominant role in population distribution. The presence of coal and iron ore in different parts of the world has attracted huge population in these areas because these are key minerals required for iron and steel industry. Development of industries in any region has a very favorable impact on employment opportunities. Industrial hubs attract people from far off places.
The eastern part of USA Peninsular Plateau in India and Western Europe are some of the common examples which have a larger concentration of population, mainly because they are highly industrialized. Now next question number 3. What is meant by literacy rate? Why is it considered an important indicator in population composition? Literacy rate is the percentage of people who can read and write in a certain country. The literacy rate of any country is an important indicator as it affects the socio-economic development of a nation. Question number 4. Define sex ratio. What are the reasons for the declining sex ratio in India? Answer. It is a ratio between the number of females and males in a population. The sex ratio is expressed as number of females per thousand males. The reason for the declining sex ratio in India are preferred for male child due to social, economic and religious reasons. Infant mortality is higher among girls than young boys because of lack of proper medical facilities. Number 3. General neglect of female children during childhood is largely responsible for high female mortality rate. Number 4. Prenatal sex determination test, in spite of ban, continue to large scale practice of female ferticides. Now next question number 5. Which state of India have highly density of population and why? Suggest ways and means to check it. तो इसका आंसर होगा बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश आर स्टेट with high density of population because of favorable climate conditions, rich fertile soil, well developed agriculture and a high level of industrialization. Some ways to check the population are: number 1. Minimum age of marriage norms must be strictly followed. Number 2. Family planning must be encouraged. People must be made aware of different methods of birth control. Number 3. Female literacy rate and education must be increased because educated people have a better outlook towards family size. Now your chapter is completed. Thank you for watching.